Respected physical education teachers and dear students, myself Praveen Mishra, PGT physical education teacher, express thank for given inputs in my first video. Today's topic of session is Unit 1, Management of Sporting Events. The overview of my session is fixtures and its procedure, knockouts and league tournaments. Under this, there are three type of tournaments are there: knockouts, leagues, and combination type of tournaments. We'll discuss one by one. Now, the first type of tournaments, knockouts or elimination type of tournaments. In the knockout tournaments, a player or team continue to play matches until they are defeated. In this type of tournaments, player or team are constantly played to give their best performance, to avoid their elimination. Such type of tournament to save their cost, time, ground structure, financial structures. The fixtures are drawn on the basis of lot systems in early stages. In this type of system of the tournaments, sometimes the good teams may be the eliminated in a early stages. It may be called as in accidental. Knockout tournaments, example of knockout tournaments, inter-district tournaments, CBSE tournaments, in cluster tournaments, and in a FIFA tournaments is also there. The merits and demerits of knockout tournaments is first we'll discuss in merit and after that demerits. The knockout tournaments is less expensive because if the team are defeated to eliminate for the competitions, and this type of tournament enhancing the sports performance because the best performance to avoid their defeated. The less number of matches so that less time is to complete that tournament, and maximum number of officials is not required to organize this type of tournaments. What are the demerits are there? There are the many chances the elimination the good team are eliminated in first and second rounds. The maximum chances are there. The weak teams should be entered in the finals, and if the weak teams are entered that final, now the chances of spectators' interest might be in final matches are less. Now the second type of tournament is league tournaments, or it may be the called as round robin type of tournaments. The league and the round robin tournaments, the matches is allotted in the early stages. The fixed number of matches to be played by the teams or the players. Equal chances to be given on the basis of the format of the ranking, or it may be the point scale. The team will be allotted in the positions. This type of tournaments involves in more money, time, and the different type of facilities. Now, knockout tournaments are there is no provision for given that any type of seedings for extraordinary teams or players. Now, what are the demerits and merits of the league tournaments or round robin tournaments? First, we'll discuss in merits, and second is demerits. Luck factors matters does not involve. If the good team are lost in the matches, chances to be given because this type of tournaments on the basis of points and position will be given. Less pressure should be given to given that specific performance. More number of matches to show their talented. What are the demerits are there? More time to finish, more economical factors, and each matches are not to be crucial means, and the chances the spectators sometimes feel that boring. There are the four different type of combination type of tournaments are there. Knockouts come leagues, league come knockouts, league come league, and knockouts come knockouts. Now, what are the three basic factors are there where to conducting their different type of tournaments? First is fixtures, second is bias, and third is the seeding. Now, first, what is a fixture? Fixtures, it is arranging in a teams in a particular times or places. Now, second is second pictures. Pictures, it is a process for arranging on the basis of systematic orders in a various for a group competition to fight in a physical activities. What is a bias? Bias at where the teams are not to play in the preliminary rounds, it should be given on the basis of random or on the basis of lottery systems. Now, what are the seedings? Seedings, the teams should not be played in an initial round on the basis of ranking or a previous year performance. They should not to play in a early stages for the tournament. They are directly played to three quarters or quarters or sometime in semi-finals. Now, how to draw in the procedure for making a knockout tournaments or elimination type of tournament? What is the first step? Total number of teams, that is n. Second step is total number of matches, that is n minus 1. Now, total number of halves will be given in upper and lower halves. In odd numbers, n plus up in upper half, it is n plus 1 divided by 2. Lower half, that is n minus 1 divided by 2. If it is even numbers, n by 2, it may be the upper half, it may be the lower half. Now, the second is total number of bytes. This 2n minus n means to the power divided by total number of teams. In upper half, lower half, upper half may n minus 1 divided by 2, or
in lower half n plus 1 divided by 2, that is in a odd numbers. If it is even numbers, n minus n by 2 in a both in upper half and lower half. Now the allotment of features. Now first by will be given in the last team of the lower half. Second bias will be given in the first teams of the upper half. Third bias will be given in the first team of the lower half. And the fourth bias will be given in the last team of the upper half. The last step is total number of rounds, that is 2n. Now the procedure for drawing the league tournaments or procedure for drawing the round robin picture. There is the three methods which we are using: cyclic, staircase, and a table form method. Total number of teams it is n. Total number of matches is n by n minus 1 divided by 2. If total number of rounds it is n minus 1 even numbers, and total number of rounds is n if it is odd. In the staircase method it is n means total number of teams. Total number of matches same, that is n by n minus 1 divided by 2. But if it is rounds in even numbers or odd numbers, it is n minus 1. And next is the table form methods. Total number of teams, it is n. Total number of matches, same, n by n minus 1 divided by 2. If it is number of rounds, n minus 1. If it is in even numbers, if it is odd, that is n. And total number of rows or columns we have to draw. In even numbers, n plus 1. In odd numbers, n plus 2. We have to draw in rows and columns. Now, on the basis of league tournaments, point scale should be main. Now, one it is a 5 points, draw it is a 3, loss it is a 0. Examples which are showing, if the team is 6, now the total matches played by 5. One of the example I am showing total number of matches. अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में ए नंबर ऑफ टीम दो मैच जीती है एंड लॉस्ट इज 0 एंड ड्रॉ इज 3. तो टोटल नंबर ऑफ 2 into 5, that is 10, and total 3 draw is 3, means 3 into 3 it is called as 19. So on the basis of position we have to ranking, we have to given. Now the first is 5, E team is their first position. Second is us because it is 21. Now C is the third position, that is 20 points, and fourth is a 19, that is A, and after that fifth is a 18 points. Now, on the basis of British systems, point scale should be there. The total point 1 divided by the maximum possible points. Now, the percentage 1 points 1 is equal to total points 1 into 100 divided by total possible points. If any teams are playing 15 matches, 1 is 10, draw is a 4, and matches should be percentage of win is simply calculated as total point is 50 plus 12, yani 50, 10 into 5, that is 50, and 4 into 3, that is 12, is equal to 62 points. Possible points 15 matches are there, means highest point 15 into 5, that is a 75. If the 62 into 100 divided by 75, the percentage is 82.66. Now, American matches, the total point matches is 1 divided by a total number of matches played. यानी कितना matches वो played करता है उसका हमें percentage निकालना है. The percentage 1 by the total number of matches into 100 divided by the matches played. If the any teams are playing 15 matches, 1 in a 10, the percentage of the matches 1 is simplified. यानी total number of matches 15 है, 1 का ratio 10 है. Now 10 into 100 divided by 15. Now the ratio is 66.66. Now, few example I am showing to you knockout tournaments on the basis of odd. Now, the total number of odd number is 25. Now, total number of matches n is 25. Now, total number n minus 1 24. Total half n plus 1 divided by 2, यानी upper half में 13, lower half में n minus 1, it is 12. Now, total number of bias 2n minus n, यानी यहाँ पर bias 7 होगा, upper half में n b minus 1, number of bias minus 1 divided by 2, यानी 3, and number of bias plus 1 divided by 2 in lower half in a fourth, and total number of round is 5, 2n हो जाएगा. Now bias का system same है, 25 में first bias, second bias first में. Now third bias we have to give in 14 numbers teams में, and 13 bias we have to give in the 13 number teams. Accordingly we have to give that biases. Now आपको number of matches, number of rounds दोनों indications करने हैं और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सी टीम्स विन हुई है. Accordingly, आपको justify करना है in your answer. Total number of matches showed in 24. In knockout system, even number is which we are showing you 20. N number team is 20. N minus 1 total number of matches is 90. Total number of halves meaning n by 2 हो जाएगा in 10 from upper half and lower half. Number of bias 2 n minus total number of teams. यानी total number of bias is 12.
यानी अपर हाफ लोअर हाफ में n बाई टू एन बी माइनस डिवाइड बाई टू हो जाएगा, 6 अपर हाफ में और 6 लोअर हाफ में, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 2n माइनस टोटल नंबर, तो 2n होगा इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 19 होंगे। सेम मैंने यहाँ पर बायस भी अपर हाफ लोअर हाफ में फर्स्ट बायस यानी 20 नंबर की टीम है, फर्स्ट हाफ फर्स्ट सेकंड बायस यानी फर्स्ट नंबर की टीम है, थर्ड बायस वी हैव टू गिवन ऑन 11 नंबर्स की बायस में, एंड 10th बायस वी हैव गिवन फोर्थ नंबर की बायस में, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव देयर बायसेस। Now seedings we have to give. First is special seeding in odd numbers 4. यानी पहले हमें टोटल नंबर ऑफ सीडिंग टीम्स को माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स में, टोटल 19 हो जाएंगी। ना टोटल नंबर ऑफ मैचेस 22 होंगे, अपर हाफ में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 12, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 11, यानी अपर हाफ में 12, लोअर हाफ में 11 टीम्स होंगी। ना टोटल नंबर ऑफ बायस यानी एन बी माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स यानी 32 माइनस 19 यानी 13 होंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ जाते हैं यानी n प्लस 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले हमें सीडिंग्स देना है एंड आफ्टर दैट हमें बायस प्लॉट करना है। 23 की टीम्स हमें फर्स्ट सीडिंग्स होंगी, सेकंड सीडिंग्स फर्स्ट नंबर की टीम होगी, 13 नंबर की टीम में थर्ड सीडिंग्स होंगी, एंड 12 नंबर की टीम में फोर्थ सीडिंग्स होंगी। एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव, आफ्टर दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर बायसेस। ना टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 22 होंगे। ना इवन नंबर की टीम्स हमें प्लॉट किया गया स्पेशल टीम फॉर 4 नंबर की टीम्स में। यहाँ पर 22 माइनस 4 यानी 18 बायस हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस n माइनस 1 21 हो जाएंगे। अपर हाफ लोअर हाफ में सेम, यानी यहाँ पर 22 बिकॉज यहाँ पर इवन नंबर थे, यहाँ पर इसलिए 11 टीम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, बायस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे क्योंकि 14 बायस कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पर 6 हो जाएंगे। सेम मैंने 22 नंबर की टीम से सीडिंग 1, 22 फर्स्ट नंबर की टीम में सेकंड सीडिंग, 12 नंबर की टीम में थर्ड सीडिंग, 11 नंबर की टीम से फोर्थ सीडिंग दिया है। अकॉर्डिंगली बायस हमने दिया है 21 टीम को फर्स्ट बायस, सेकंड नंबर की टीम को सेकंड बायस, 13 नंबर की टीम को थर्ड बायस, एंड 10 नंबर की टीम्स को फोर्थ बायस दिया है। एंड दिस आर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ देयर लॉट सिस्टम्स के बेसिस में दिया जाता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज 21। Now 8 number की series, total number if they are given that 8 series are there. Now odd numbers में हमें सेम करना है, 25 माइनस 8 यानी 17 हो जाएगा फर्स्ट राउंड में मैचेस खिलाने बायस देने के लिए। टोटल नंबर ऑफ मैचेस n माइनस 1 यानी 24। इट इज ऑड नंबर्स आर देयर यानी यहाँ पर 20 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 13, n प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 12 टीम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ बायस 25 माइनस n यानी 32 माइनस 17 यानी 15 टीम, n प्लस 1 6। सेम बायस हमें सीरीज देना है, 15 नंबर की टीम को फर्स्ट नंबर सीरीज, सेकंड नंबर में फर्स्ट टीम्स को देना है। नाउ 14 नंबर की टीम को थर्ड सीरीज देना है एंड 13 नंबर की टीम को फोर्थ सीरीज देना है। अकॉर्डिंगली हम सेम मेथड वी हैव टू यूजिंग इन अ बाय सेकंड राउंड में सीरीज देना, आफ्टर दैट वी हैव टू अलॉटमेंट ऑफ देयर बायस। नाउ हमें जो सीरीज नंबर की टीम्स है हमें इसको प्री क्वार्टर्स में डायरेक्टली हमें खिलाना है ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉट सिस्टम, एंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कम एज 24। Now, if the teams are even numbers are there in an allotment of their 8 numbers की teams अगर सीरीज है तो 22 minus 8 14 सीरीज, n minus 1 यानी मैचेस यानी 21 हो जाएंगे। इक्वल है तो यहाँ पर तो हाफ 11 हो जाएंगे, अपर हाफ लोअर हाफ 11 टीम्स। तो टोटल नंबर ऑफ बायस यानी 16 माइनस 4 हो जाएगा जो कि लेस देन 2 का रेशियो में कम है, इसलिए यहाँ पर 16 माइनस 4 2 बायस होंगे, एंड n माइनस 1 यानी 5 हो जाएंगे। सेम अलॉटमेंट ऑफ देयर सीरीज देना है, 22 नंबर की टीम में सीरीज फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन में हमें 2 देना है, थर्ड में हमें जो सीरीज हमने अलॉट किया 12 नंबर की टीम्स में, 11 टीम्स में, यानी फोर्थ नंबर की सीरीज हमें दिया है। एंड सेम मेथड वी आर यूजिंग टू अलॉटमेंट ऑफ गिवन दैट सीरीज। नाउ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इट्स कम एज 21। नाउ द लीग टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स आर देयर, साइक्लिक मेथड्स आर देयर। नाउ साइक्लिक मेथड का बेसिक रूल्स क्या होता है कि हमें क्लॉकवाइज सिस्टम्स में रोटेशंस फॉर्मेट करना है। If the odd numbers are there, bias numbers are seeding to be fixed, and the total number of matches is n. Total number of matches is n by n minus 1 divided by 2 यानी 55 हो जाएंगे। ग्राउंड्स क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बायस को फिक्स किया और इन बायस को ही फिक्स किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट टेबल। पॉइंट टेबल के बेसिस पे ही हमें रैंकिंग करना है। तो 11 टीम्स है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन 10। ना मैचेस 1 बाय, अगर हम पॉइंट्स दे रहे हैं तो 5 है, मैचेस लॉस 0 है, मैचेस ड्रॉ 3 है। तो यहाँ पर टोटल रैंकिंग के बेसिस पे हमने बनाया है। एंड अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट मैचेस जो जीता है टीम जीती है 9 नंबर की टीम है, के को हमने फर्स्ट पोजीशन दिया है बिकॉज इट इज अ 46 पॉइंट है। बी नंबर की टीम को 35 है,
एंड आई नंबर की टीम को 33 है बिकॉज ऑफ सेकेंड रैंकिंग है, एंड फोर्थ दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ पोजीशन में ई नंबर की टीम है, दैट इज कॉल्ड एज 32 है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट स्केल। Now cyclic method से even numbers की teams दिए हुए हैं, 12 total number is 12. Now number of matches n by n minus 1, total number of matches is 66, number of round is 11. यहाँ बस वन नंबर की टीम को फिक्स किया गया है और उसके बेसिस पे साइक्लिक मेथड में हमें रोटेशन फॉर्मेट किया गया है। अगर आपको आंसर अपना चेक करना है तो आप रिवर्स ऑर्डर में चेक कर सकते हैं अपना आंसर 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके, और टोटल नंबर ऑफ जो मैचेस दिए गए हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लिखे गए हैं। Now, same as method for using that point scale, we have to generate it. If the team is playing on 12, 11 number of team, total number of matches is played by 11. Now, matches one score is 5, lost by 0, drawn by 3. अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखेंगे बी नंबर की टीम फर्स्ट है 40 पॉइंट्स आर देयर। ना 30 नंबर की टीम जे है 37 आर देयर। आप जी देखेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 34 एंड लास्ट इज ई पॉइंट्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एज 32. Now next is table form method. Tabular methods are there basically. Total number of team is n. यहाँ पर हमें रॉस और कॉलम्स को डेवलप करना है। ऑड नंबर से जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया है कि n प्लस टू n प्लस टू होगा जी 9 प्लस टू दैट इज कॉल्ड एज 11. टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज n by n minus 1 divided by 2, इट इज कॉल्ड एज 36. नंबर ऑफ राउंड इज n. यानी आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों आपको 9 लिखना है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड लास्ट में 9। अगर आप अंदर टेबल में देखना है दैट इज कॉल्ड एज राउंड। ना यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 6 अपर में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट कॉलम में आपको इवन नंबर पहले लिखने हैं 2 4 6 8 एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 7 एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेक। फर्स्ट आपको वर्टिकली देखना है एंड हॉरिजॉन्टली मैच करके राउंड्स में इंडिकेशन करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डेवलप करना है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। Now point scales are there. Now same if the teams are playing 9, now matches played by 8. now यहाँ पर first I है, I team है यानी H, first team is H है 38 points, second is D 34 points, third is G 33 points and second is fourth is C that is 31 points. After the table method, tabular form method, it is even numbers are there. Even numbers में जो total number of rows and columns होंगे n plus 1 यानी 9 हो जाएगा। Matches is n by n minus 1 divide by 2 यानी 8 हो जाएगा। Now how we develop that table form method? यहाँ पर rows और columns आप में total 7 होंगे क्योंकि यहाँ पर total number of rounds n minus 1 है। ना आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच तक अंदर आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट कॉलम में इवन नंबर्स 2 4 6 होगा एंड आफ्टर दैट ऑड नंबर्स 1 3 5 इज देयर एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डेवलप देयर पॉइंट स्केल टेबल्स। ना पॉइंट स्केल टेबल्स वी हैव टू जनरेट कंपलसरी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स। हमें लीग टूर्नामेंट्स को हमें जस्टिफाई करना है। Now the last method is league tournament is staircase form, that method is there and odd numbers there है। Now odd numbers में अगर 11 teams are there, total number of matches is n by n minus 1 divided by 2 यानी 56. Total number of round is n minus 1 that is 10. Now number of rounds यहाँ पर अगर 10 दिए हुए हैं तो every में फर्स्ट राउंड में वन नंबर की टीम फिक्स होगी, सेकंड में सेकंड होगी, थर्ड में थर्ड होगी, फोर्थ में फोर्थ होगा, फिफ्थ में फिफ्थ होगा, सिक्स में सिक्स होगा, अकॉर्डिंग अप टू 10 तक। ना हमें फॉर्मेट स्टेयर केस फॉर्म में करना है। स्टेयर केस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमें टीम्स को भी पार्टिसिपेशन कराना है मैचेस के थ्रू। ना पॉइंट स्केल हमें जनरेट करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ टीम 11 है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड 10 होंगे। 1 पॉइंट इज 5, इफ इट इज लॉस इट इज 0, ड्रॉन इज 3। ना अगर आप देखेंगे यहाँ पर बी नंबर की टीम फर्स्ट है, ए नंबर की टीम सेकेंड है और ई नंबर की टीम थर्ड है एंड के नंबर की टीम फोर्थ पोजिशन में। Now last is the staircase method for even numbers. Now even numbers में हमें 10 numbers की टीम है। अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस है n by n minus 1 यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस 45 हो जाएंगे। n नंबर राउंड इज n minus 1 यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा। सेम प्रोसेस वी हैव टू डेवलप। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स अप टू 9 तक हमें देखना है। नाउ फर्स्ट टीम हमें फिक्स कर लेना है। पहले राउंड में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ सिक्स में 6, सेवंथ में 7 एंड लास्ट में 8 एंड आफ्टर दैट 9। द पॉइंट स्केल वी हैव टू जनरेट अकॉर्डिंगली और हमें उसके बेसिस में हमें पॉइंट डेवलप करना है। आफ्टर दैट अगर टीम 10 है तो हमें मैचेस प्लेड 9 होंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेस 1 का 0.5 होगा, मल्टीप्लीकेशन जितनी भी टीम्स उसमें जीती होंगी। लॉस्ट का 0 है एंड ड्रॉ का 3 होता है एंड अकॉर्डिंगली हमें टीम्स में मल्टीप्लीकेशन करके हमें पॉइंट स्केल्स और पोजिशंस को डेवलप करना है। Now references which we are taken, first the curriculum मैंने follow किया है and after that
फिजिकल एजुकेशन की बुक्स जो सीबीएसई हैंड बुक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू।